आज की क्लास हमारी रहेगी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। RPWD Act 2016, which was approved and sanctioned on 27 December 2016. And this is an act to give an effect to the UN conventions on the rights of persons with disabilities. तो इसमें जो यूएन कन्वेंशंस थे वहाँ पर जो डिस्कस हुआ, जिन प्रिंसिपल्स को देखा गया कि दोज विच कैन एम्पावर द पीडब्ल्यूडीज, तो उनको जो है एक फॉर्म में लिया गया ताकि उनको हम लॉ की फॉर्म में लिख करके आए। तो इसके लिए यूएन कन्वेंशंस लेज डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स टू एम्पावर दिव्यांगजन। First point is respect for inherent dignity. Individual autonomy, independence, and freedom of their choice. जहाँ पे कि हमें उनका रिस्पेक्ट करना है, इनहेरेंट डिग्निटी है ना, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, उनके इंडिपेंडेंस की, उनके फ्रीडम की, इन चीज़ों को हमें उतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना कि हम आम आदमी को, आम सिटीजन ऑफ इंडिया को देते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही उसको हमें ग्रेसफुली इन चीज़ों को देखना है ना। नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। Full effective participation in society, full effective participation of society and inclusion in society. सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो और उन लोगों को भी हम सोसाइटी में इंक्लूड कर पाए। So these are the targets जिनके ऊपर इन लोगों को एम्फसाइज किया, जोर दिया गया। And the respect for differences and acceptances of PWDs, as a human diversification. Fifth point is equality of opportunities. इनको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दी जाए जितना कि हम और लोगों को देते हैं, इनको भी उतना ही लाइफ में मौका मिलना चाहिए काम करने का, पढ़ने का, दूसरे अपने पार्टिसिपेशन का, जितना कि सभी लोगों को दिया जाता है। तो इसके ऊपर हाईलाइट करना। एक्सेसिबिलिटी, equality between man and a woman, दिव्यांगजन, respect for evolving capacities of CWD. CWD यहाँ पर है कि children with disabilities and rights, and preview their identities. So, India was a signatory to the conventions. And during these conventions and meetings, we have found and discussed the rights and entitlement, education, skill development and empowerment, social security,
health, and disability rehabilitation. And they given a special provision for PWD's benchmark disability. A special provision for benchmark disability. बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपको आइडिया है इसका? बेंचमार्क डिसेबिलिटी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि दोज दिव्यांगजन, those who have a minimum at least 40%, so 40% and above, they comes under the benchmark disabilities. So अभी रुकिए थोड़ा रुक जाइए थोड़ा सा. And a special provision for PWD's high support needs. So in high support needs, we provide aids and appliances, artificial limbs, and supportive walking instruments like calipers, orthosis, and splints. Next point, duties and responsibility of the approved government. The registration of the institutes for PWDs and their grants. Certification of the specified disabilities. कि जो भी उनकी डिसेबिलिटीज हैं वो सर्टिफाइड की जाए और उनके लिए सर्टिफिकेट्स इश्यू की जाए. So this is the certification of specified disabilities. Central and a state advisory board on disability and district level committees. Provision of Chief Commissioner and a State Commissioner for persons with disabilities. In RPWD Act, they have also provided special provision of the special courts to deal their day-to-day problems and other litigation also. National funds for persons with disabilities, special funds for these Divyangjan, offense and penalties, and other miscellaneous articles and items. In this RPWD Act, they have also emphasized on some terms and points. These are, one is barrier. Barrier means we have to give a barrier-free environment, because barrier factor hampers full participation of the Divyangjan. यदि कोई भी बाधा आती है उसको चलने में, उठने में या अपनी एक्टिविटीज को करने में, तो उसकी वजह से उसका पार्टिसिपेशन कम हो जाता है. तो वी हैव टू प्रोवाइड अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, जिसके लिए कि रैंप हमने उसको देना है, ग्रिल देना है,
है ना, चलने का सिस्टम इस तरीके से हो कि उसको चलने में दिक्कत ना आए। सो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट वी हैव टू प्रोवाइड। तो ये देर सवेर ये सब इम्प्लीमेंट होगा इसमें। और वन मोर टर्म इज देयर, केयर गिवर। Any person, parents, family members, they care, support and assist PWDs, person with disabilities. There is also promotion of inclusive education. Specific measures to provide facilities for these inclusive education programs. Also highlighted on persons with benchmark disability. Person with a not less than 40% disability. Means only those are disabled with that facilities who have 40% or more than that disabilities. They will be the beneficiaries of these benefits. Persons with a high support needs, high support needs are required by physical, medical, intellectual and sensory impairments. These disabilities interacting with barriers hinders his participation, hinders the Divyangjan's participation. ठीक, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा कि प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स and public facilities, there must be provision of reasonable accommodation. Private establishments, private buildings, public facilities, registered organizations, all these have reasonable accommodation and necessary appropriate modification. कि इसके अनुसार आपको चाहे प्राइवेट बिल्डिंग है या पब्लिक बिल्डिंग है या पब्लिक फैसिलिटीज है, वहाँ आपको इन सब के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि ओल्ड एज पीपल, दिव्यांग पीपल, ये मस्ट है कि भाई वहाँ पे ग्रिल होना चाहिए, वहाँ पर आपको सपोर्ट होना चाहिए, चलने के लिए कोई बैरियर ना हो, स्टेयर्स ना हो। अभी जब भी आप कोई पब्लिक फंक्शन करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि स्टेजेस पर या जो भी डाइस होता है, डाइस तक आपके रैंप बनाए जाते हैं ताकि रैंप पे उनको जाने में दिक्कत न हो। तो इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का एक प्रोविजन रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएं। तो ये सब जो फैसिलिटीज हैं, इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो वॉशरूम्स हैं, हमारा पब्लिक फैसिलिटी यहाँ पर है, तो इवन इन बाथरूम्स, तो वहाँ पर रॉड्स वगैरह रहती हैं ओल्ड एज पीपल के लिए, या वहाँ भी जो ग्रिल रहती है,
तो ताकि वो गिरे ना, उसको सपोर्ट करके वो चल पाए, खड़ा हो पाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और इसी में हम आगे जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसमें भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहे रोड पर है, एयर है, वाटर है, पैरा ट्रांजिट है, all these systems have provision of the supportive standing and walking movements. सेम इसी प्रकार से यूनिवर्सल डिजाइन रखे गए कि ऑलमोस्ट चीजों के जो डिजाइन है यूनिवर्सल एक जैसे होने चाहिए, चाहे दे आर यूजिंग इन इंडिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन कंट्री। सो यूनिवर्सल जो चीजें प्रैक्टिस में आ रही है, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उन सब का जो डिजाइनिंग है लगभग एक जैसा ही होना चाहिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना यूज कर सकें। इवन आप दिल्ली में गए तो मेट्रोज का जो सिस्टम है कि मेट्रो का एंट्री पॉइंट, मेट्रो का एग्जिट पॉइंट, मेट्रो का जो है कि वहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग एक जैसे ही रखेंगे सारा। और इवन उसमें वो टाइल्स का एक माप नीचे दिया जाता है ताकि कोई विजुअली हैंडीकैप्ड आ रहा है या दूसरे लोग आ रहे हैं तो उनको पता लग जाता है कि वो किस तरीके से कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये सब सिंबल भी है, इंडिकेशन भी है। तो एक यूनिवर्सल डिजाइनिंग इस तरीके से बनाई गई है ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। इसमें we have highlighted and emphasized on protection, services and safety, home and family, and their personal life. So rights and entitlements में we have given a right for their services and safety in a home and family for their personal and reproductive life. Next is access, accessibility. इनका accessibility होना चाहिए वोटिंग के लिए, जस्टिस के लिए एंड गार्जियनशिप। And educational institutes, they will provide facilities for inclusive education. सभी स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल से लेकर के सीनियर एंड हायर लेवल तक, इवन इन अ कॉलेज, they will encourage inclusive education. So they will allow to run courses and training programs for normal people as well as Divyangjan. Skill development and empowerment, इसमें की vocational trainings, self-employment, there are non-discrimination and equal opportunities. There is also a special provision for high support needs
any person with a benchmark disabilities need high support, aid appliances of aid appliances. There is also some duties and responsibilities of the appropriate government जिसके अंतर्गत they covers awareness, accessibility, HRD and training programs. Registration of the institute and grants. Central and the state advisory board on disability, प्रोविजन रखा गया कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो एडवाइजरी बोर्ड फॉर डिसेबिलिटीज रखेंगे आगे, ताकि उनके आने वाली प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पर उनको सॉल्व आउट करें, और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है तो वो फिर ये कि गजट में भी उसको बाद में चेंज किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, तो ये प्रोविजन इसका रखा गया। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पेशल डिसेबिलिटीज। And finally, Joint Secretary of Government of India delegates and deals with the disability policies. So this is the RPWD Act 2016. This is the gist of all these problems. No, not problems. All these issues of the Divyangshan which require attention provided with important provision of supportive laws. इसमें अभी नेक्स्ट पेज पे छोड़ के अगले पेज पे लिखें, जैसे हम कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए। Each nation has to tap and harness the talents and services of its Divyangjan and promote their all-round speedy development. Next is need for their early rehabilitation through skill development and income generating activities to meet the mainstreaming of PWDs, persons with disabilities in a society.
because lack of capabilities and opportunities are responsible of poverty and hunger. So lack of capabilities and opportunities are responsible of poverty and hunger. Goal of HRD is normally to have competent and motivated people to ensure higher level of productivity, profitability and growth of the organization. Yes. So actually there is an emergency, so I have to go. Where actually my mother की तबीयत ठीक नहीं है, so. So no country can flourish and prosper if a significant segment of the person with disabilities are ignored and their contributions are not capitalized. Interagencies coordination, next point. Interagencies coordination and multi-sector collaborative approach is required for their total rehabilitation or comprehensive rehabilitation of these Divyangjan. So that's all. These are the basics of this act. So today we have discussed and mentioned main points of this act. तो इसको आपने गो थ्रू करना है, ध्यान से पढ़ना, देख करके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ठीक.